नमस्ते। आज की कक्षा की ओर सबका सहर्ष स्वागत। आज हम सीबीएसई 10वीं कक्षा के हिंदी कोर्स बी पुस्तक की एक कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़े, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। आप छायावादी कवि चतुष्टय में से एक है। छायावादी कवि चतुष्टय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत आते हैं। छायावाद इससे क्या मतलब है? प्रकृति में मानवीय व्यापारों एवं अनुभूतियों की छाया की काव्य की प्रस्तुति है छायावाद। पंत जी सुकुमार कवि नाम से ही जाने जाते हैं। आप ये नाम से इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने प्रकृति की कोमल भावनाओं का वर्णन अत्यंत मनोरम ढंग से किया है। उन्होंने अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग काफी मात्रा में किया है, इसीलिए कविता का सौंदर्य और बढ़ गए है। प्रस्तुत कविता में भी उन्होंने रूपक, उपमा, बिंब, मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। एक कविता पढ़ते वक्त आदि से अंत तक देख सकते हैं। आज हम पढ़े पर्वत प्रदेश में पावस। एक पर्वतीय क्षेत्र। पर्वत प्रदेश इससे क्या मतलब है? पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, माउंटेन्स रीजन। और पावस इससे क्या मतलब है? पावस इसका अर्थ है वर्षा ऋतु या रेनी सीजन। वर्षा ऋतु से आप लोग परिचित है या पर्वतीय क्षेत्र से भी आप लोग परिचित है। पर्वत की विशेषताएं क्या क्या है? पर्वत की विशेषता यह है कि पर्वत इतना बड़ा और ऊंचा होने के कारण दूर दूर से तक वह दिखाई पड़ते हैं या देख सकते हैं। उसी प्रकार वर्षा ऋतु की विशेषताएं कौन कौन है या क्या क्या है? वर्षा ऋतु की विशेषताएं, वर्षा ऋतु में रिमझिम पानी बरसते हैं, सर्वत्र पानी दिखाई पड़ते हैं, सारे जलाशय पानी से भरे रहते हैं। जलाशयों का पानी इतना स्वच्छ और साफ होने के कारण वो दर्पण जैसा, आईना या मिरर जैसे दिखाई पड़ते हैं, है ना। और वर्षा ऋतु में बीच बीच धूप आने पर इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं या रेनबो दिखाई पड़ते हैं। आप लोग इससे परिचित है। इंद्रधनुष इतना सुंदर होने के कारण इंद्रधनुष के आते वक्त बच्चे हाय हाय करके आनंद का अनुभव उठा लेते हैं। और बीच बीच में बादल या क्लाउड सर्वत्र छा गए हैं। ऐसे वक्त सारे दृश्य आंखों से ओझल पड़ गए हैं और तुरंत बाद तेज वर्षा होती है। इस प्रकार पल पर प्रकृति में परिवर्तन आते हैं या क्षण भर प्रकृति का रूप बदल रही है। देखिए, पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी, रेनी सीजन थी। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल क्षण भर प्रकृति का रूप बदल रही है या प्रकृति में परिवर्तन आते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाट, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिनके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार इससे क्या मतलब है? मेखलाकार इसका अर्थ है करधनी और विशाल काय पर्वत है और साथ ही पर्वत की श्रृंखलाएं है, डेटी मेटी श्रृंखलाएं हैं। पर्वत की ये श्रृंखलाएं देखकर ऐसा लगता है कि जो करधनी के समान है। करधनी इससे मतलब क्या है? करधनी इससे मतलब यह है कि कमर में पहनने का एक आभूषण जो सोना या चांदी, गोल्ड और सिल्वर आदि से बनी हुई है। ये पर्वत की श्रृंखलाएं देखकर ऐसा लगता है कि वो करधनी है। अपार, बड़ा या श्रृंखलाएं, इसका अर्थ ऐसा है।
अपने सहस्र दृग सुमन फैड, पर्वत में सहस्र हजारों, दृग आंखें, सुमन फूल, फाड़ जो ओपन खोलकर, इस पर्वत में हजारों फूल खिल उठते हैं। देखकर कवि को ऐसा लगता है कि ये आंखें आंखें रूबी फूल है, ये फूल आंखों के समान है। यह पर्वत अपने फूलों रूपी आंखें खोलकर नीचे के जल में अपना आकार या अपना रूप देख रहा है, अवलोक रहा है, बार बार अवलोक रहा है, देख रहा है, बार बार, अगेन एंड अगेन। और जिसके चरणों में फला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, और इस पर्वत के नीचे एक ताला है। ताला इसका अर्थ है तालाब या जलाशय। इस जलाशय का पानी इतना स्वच्छ और साफ होने के कारण जो दर्पण जैसा, आईना जैसा यानी मिरर जैसा दिखाई पड़ते हैं। मिरर की विशेषता क्या है? इसमें प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसलिए इस विशालकाय पर्वत का आकार या पर्वत का प्रतिबिंब नीचे के दर्पण जैसे विशाल जलाशय में देख सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि पर्वत अपने फूलों रूपी आंखों से नीचे के दर्पण जैसे जलाशय में अपना आकार या अपना सौंदर्य बार बार देख रहा है। यहाँ उपमा अलंकार है। फूलों रूपी आंखें, पर्वत में जो फूल खिल उठते हैं उसे उसकी उपमा आंखों से की गई है। और साथ ही मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन अलंकार भी है। अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है, अगेन एंड अगेन। मनुष्य देख सकते हैं, आईने में मनुष्य अपना सौंदर्य या अपना रूप देखते हैं। उसी प्रकार पर्वत के संबंध में यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। और बाकी देखिए, गिरी का गौरव गाकर छर छर मधु में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर छरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी का गौरव गाकर, गिरी पर्वत, पर्वत का गौरव, पर्वत की महानता गाते हुए एक झरना, एक स्ट्रीम नीचे की ओर बह रही है। किस प्रकार? छर छर, झरना बहते वक्त झरझर आवाज निकलते हैं। आवाज यानी साउंड, छर छर आवाज निकलते हैं। यह आवाज सुनकर सुनने वालों के मन में उत्तेजना फर आते हैं। छर छर मधु में नस नस उत्तेजित कर, मद मग्न होना या इंटॉक्सिकेटेड, नस 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 नर्व्स। यह झरना बहते वक्त छर छर आवाज सुनाई पड़ते हैं। ऐ सुनकर कवि को ऐसा लगता है कि यह झरना पर्वत की महानता की बातों के बारे में गीत गाते हुए नीचे की ओर बह रही है, ऐसी से बह रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर, इतनी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने के कारण पानी की बूंदें चारों तरफ बिखर रही है। इस प्रकार की बूंदें देखकर ऐसा लगता है कि जो मोतियां है, मोती पेड़, मोतियां की लड़ियां है। लड़ी इससे क्या मतलब है? चेन, एक माला है। हम एक धागा में एक एक मोतियां भिगोकर माला बनाते हैं और गले में पहनते हैं, है ना? आप लोग इससे परिचित है। इस प्रकार पानी की बूंदें चारों तरफ बिखरते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि जो मोतियां है, मोती से बनी हुई लड़ियों के समान यह बूंदें दिखाई पड़ते हैं। और इसके बाद वह नीचे की ओर पड़ते हैं, छरते हैं, गिरते हैं। इस प्रकार गिरते वक्त वह झाग भरे हैं। झाग फर्म। हम साबुन, सोप या पानी मिलाकर फूंक, इस प्रकार करने से बबल्स उड़ेंगे।
हम देख सकते हैं। एंड बबल्स में प्रकाश पड़ने पर रिफ्लेक्शन होते हैं। इसके फलस्वरूप इसमें कई रंग दिखाई पड़ते हैं, है ना। इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई पड़ते हैं। आप लोग इससे परिचित है। इस प्रकार वहां झाग फरे है और देखने में अत्यंत सुंदर लगती है। बाकी देखिए, गिरवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हे चांग रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर बड़ा पर्वत, गिरिवर के उर से और हृदय, गिरिवर के हृदय से यानी पर्वत के अंदर से, उठकर एक तरुवर, तरुवर क्या है, वृक्ष या पेड़, उच्च आकांक्षाओं से, ऊंचे विचारों से। पर्वत के हृदय से एक तरुवर या एक पेड़ उग रहे हैं। अब पेड़ इतना ऊंचा है, इसलिए उच्च आकांक्षाओं के समान प्रतीत होता है या ऊंचे विचारों के समान प्रतीत होता है। ये तरुवर किस प्रकार खड़े हुए हैं? झांक रहे नीरव नभ पर, झांक रहे टू पीप, आसमान की ओर देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष आंखों की पलकें, पलकें आईलिड्स ने चपकते हुए। अनिमेष अटल बिना हिले डुले, अनमूव्ड। और कुछ चिंता पर, कुछ सोचकर। यह पेड़ शायद ऐसा सोचा होगा, आसमान कब छू सकते हैं, बड़ा 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 होकर आसमान कब छू सकते हैं और आसमान के रहस्यों को कब समझ सकते हैं। इस प्रकार के ऊंचे ऊंचे विचारों से यह पेड़ आसमान की ओर देख रहा है। यहाँ मानवीकरण अलंकार देख सकते हैं। आसमान की ओर देखते हैं, कौन? पेड़। यहाँ पेड़ की प्रवृत्तियां एक मनुष्य के प्रवृत्तियों के समान की गई है। और बाकी देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर, फटका अपार पारद के पर, रव शेष रह गए है निर्चर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर। उड़ गया अचानक लो भूधर, उड़ गया अचानक, सडनली, लो भूधर, भूधर पर्वत, यह पर्वत उड़ गया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्वत अपने पंखों से फड़फड़ाकर उड़ गया है। तो फटका अपार पारद के पर, अपार विशाल, पारद, पारद पारा इसका अर्थ है मरकुरी। मरकुरी का रंग कुछ धवल और चमकीला है। यहाँ एक पाठांतर है पारद के लिए, किताब में एक पाठांतर है जो वारिद है। इस प्रकार इसको पढ़ना चाहिए। और वारिद का अर्थ है मेघ या बादल। पर विंग्स, यहाँ कवि कहते हैं कि अचानक बादल सर्वत्र छा गया और बादल का रंग धवल और चमकीला था और इसलिए सामने के सारे दृश्य आंखों से ओझल पड़ गया, दृश्य देख न सकता। केवल बादल वहां बड़ा पर्वत के समान बादल उड़ रहा है। देखकर कवि को ऐसा लगता है कि यह पर्वत उड़ रहा है, अपने पंखों से उड़ रहा है। रव शेष रह गए हैं निर्चर, पर्वत के ऊपर से एक झरना नीचे की ओर बह रही थी। अभी झरना का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। रव शेष रह गए, रव साउंड, आवाज सुनाई पड़ते हैं, लेकिन झरना देख नहीं सकता। हे टूट पड़ा भू पर अंबर। कभी को एक संदेह होते हैं, एक डाउट होते हैं कि आसमान पृथ्वी की ओर गिर पड़ा हो, इसलिए आसमान और धरती एक समान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए
कवि को ऐसा लगता है आसमान पृथ्वी की ओर गिर पड़ा हो। बाकी देखिए, धस गया धरा में सब ही शाल, उड़ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलदयान में विजर विजर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अचानक दृश्य बदल गया, वहां बादल सर्वत्र छा गया। तुरंत बाद तेज वर्षा होने लगी। इतनी तेजी से वर्षा होने के कारण ऐसा लगता है कि आसमान की ओर से वर्षारूपी बाण से आक्रमण कर रहा हो। इस आक्रमण से भयभीत होकर वहां के एक शाल वृक्ष, एक साल ट्री धरती में धस गया। सब भय के साथ या भय के कारण धरती में धस गया हो। देवताओं के राजा है इंद्र। इंद्र अपने जलदयान में, बादल डूबी विमान में घूम घूम कर विचरण करते हुए इंद्रजाल दिखाकर खेल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि प्रकृति में पल भर परिवर्तन आते हैं, देखकर कवि को ऐसा लगता है कि इंद्र देव अपने बादल डूबी विमान में बैठकर घूम घूम कर इंद्रजाल दिखाकर खेल रहा है, इस प्रकार प्रतीत होता है। നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പോയത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? यहाँ के सारे दृश्य अत्यंत सुंदर है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति और आस्वादन की क्षमता दोनों बढ़ाने में यह सहायक है। हम सब पर्वत प्रदेश से परिचित है और वर्षा ऋतु से परिचित है, लेकिन ये सारे दृश्य हमारे कल्पना शक्ति को बढ़ाने में और हमारे ആസ്വാദൻ की क्षमता बढ़ाने में സഹായക होती है। നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത്? വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. ഒരു പർവ്വത പ്രദേശം എന്താണ്, അവിടെ ഒരു പാവസൃതു മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. അനുനിമിഷം പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെയിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രധനുഷ് വരുന്നു, മഴവില്ല് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പറയുകയാണ്, പർവ്വതത്തിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പുഷ്പങ്ങൾ അത് പർവ്വതത്തിന്റെ കണ്ണുകളാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു. പർവ്വതം തന്റെ പൂക്കളാകുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് താഴെ നല്ല തെളിഞ്ഞ കണ്ണാടി പോലെ തെളിഞ്ഞ ജലാശയത്തിലേക്ക് തന്റെ രൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പലതവണ കണ്ണാടിയൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടല്ലേ, സൗന്ദര്യം. അതുപോലെ ഇവിടെ മനുഷ്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പർവ്വതത്തെ. പർവ്വതം തന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ രൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കണ്ണാടി പോലെയുള്ള കുളത്തിൽ നോക്കുകയാണോ. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്, ആ വലിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അരുവി താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നു. അരുവി താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഝർഝർ ആവാസ്, ഝർഝർ എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നയാളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ ഒരു ഉത്തേജന ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ചിതറിത്തെറിക്കുന്നു. അത് മുത്തുമണികൾ പോലെ തോന്നുന്നു. മുത്തുകൾ കോർത്ത് ഉള്ള മാലകളാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന നീർത്തുള്ളികൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. അവിടെ ആ ജലാശയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു അതായത് പത, നമ്മൾ ചെറുതിലേക്ക് നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ പതിച്ച് ഇങ്ങനെ ഊതി കൊമളയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളത് കണ്ട് രസിക്കുമായിരുന്നു. അതില് മഴവില്ലിന്റെ നിറത്തിലുള്ള കളറുകളൊക്കെ കാണാം അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഈ നീർത്തുള്ളികളെല്ലാം താഴെ വീണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാതയായി കിടക്കുന്നു. അത് വളരെ മനോഹരമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഗിരിവർക്കെ ഉർസെ ഉഠ്ഉഠ്കർ, പർവ്വതത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മരം മുളച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആ മരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഒരുപാട് ഉയരമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തോന്നുവാണ് ആ മരം വളരെ ഉയർന്ന ചിന്താഗതികളുമായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അനിമേഷ്, കണ്ണ് ചിമ്മാതെ, അടൽ, സ്ഥായിയായ രൂപത്തിൽ, കൊച്ചു ചിന്താപ്പർ, എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. എപ്പോഴാകാശത്തെ തൊടാം, ആകാശത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുകയാണോ ആ മരം എന്ന് കവി ഇവിടെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് ദൃശ്യം മാറി വരുന്നു. മേഘം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു. ആ മേഘം എങ്ങനെയാണ്? വെളുപ്പ് നിറമുള്ളതും തിളക്കമാർന്നതുമാണ്.
മെർക്കുറി പോലെ കളറുള്ളതാണ്. അവിടെ ഒരു പാഠഭേദം വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പാരത് എന്നുള്ളിടത്ത് വാരിത് എന്നാക്കിയാണ് നിങ്ങളത് വായിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മേഘം എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ മേഘം വന്നപ്പോഴേക്കും മറ്റു ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഈ പർവ്വതം വെളുത്ത ചിറകുകൾ വെച്ച് പറന്നു പോകുകയാണോ. നമ്മളവിടെ അതിന് നേരത്തെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഝർണ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നു. ചർച്ചർ ആവാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് ആ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, പർവ്വതത്തെ കാണാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. കവിക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണ്, ആകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് വീണുപോയോ. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യം എന്താണ്? അവിടെ ഒരു മരം നിൽക്കുന്നു. ഈ മേഘങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയാണ്. മഴയാകുന്ന ബാണങ്ങൾ എയ്ത് ഭൂമിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണോ ആകാശത്തു നിന്ന് ദേവന്മാർ എന്ന് സംശയം തോന്നിപ്പോകുന്നു. അത്ര ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചലിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു ശാലവൃക്ഷം, അതായത് മണിമരുത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, അത് ഭൂമിയിലേക്ക് താണുപോയോ എന്ന് കവിക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണ്. കാരണം ആ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മരത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് സംശയം തോന്നിയത്? മേഘമാകുന്ന വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രജാലം കാട്ടി കളിക്കുകയാണോ എന്ന് കവി ഇവിടെ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇവിടെ വാസ്തവത്തില് നമ്മളെ കവി തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വലിയ ഒരു പർവ്വത പ്രദേശത്തേക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന മഴക്കാലത്തേക്കും മഴക്കാല ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ രൂപങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതാണ് ബിംബ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാതെ തന്നെ ചില ഭാവങ്ങളെ രൂപങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് രചിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. आज की कक्षा समाप्त होती है. धन्यवाद. हम फिर मिलेंगे. सरल हिंदी मधुर हिंदी, सरल हिंदी मधुर हिंदी.